Hello everyone. Hello everyone. Yes, welcome to Unacademy and welcome to this session. So guys, listen to our new anthem, that is Let's Crack GATE and ESE with India's largest learning platform. So before proceeding further, let me introduce myself. Guys, I am Krishan Dev. I did BTech from NIT Silchar in CSE. I also studied at IIT Ropar and at JNU New Delhi during post graduation. Along with that, I am GATE as well as NET JRF qualified in computer science. And finally, if we talk about teaching experience, then guys, I have more than 4 years of experience in GATE CSE. Okay, so now let's talk about Unacademy. So guys, everybody knows about Unacademy, that is India's largest online learning platform. So you can download Unacademy Learning app from Play Store or Apple Store, and after downloading Unacademy Learning app, what you are going to get, I am going to explain one by one. So very first thing is daily live lectures. That means every day there will be some live lectures. So you can participate in live discussions as well as you can raise your queries and doubts in the live sessions. Second thing is live tests and quizzes that will be provided on Unacademy platform. These tests and quizzes will include firstly topic wise test, followed by subject wise test, and finally there will be mock test or full length test also. Okay, so after that, third one is, we can say that structured courses. That means courses provided on Unacademy are in very structured manner. And final one is unlimited access. That means once you get the subscription and by chance you miss out any live lecture, then the same lecture can be seen in the recorded form also. Okay, I think that is the greatest advantage. So guys, you know, on Unacademy, India's topmost educators are there. So yes, you can see various courses are available on Unacademy platform. Now finally, let's talk about subscription plans. So guys, use my code, that is DEV1 DEV1 during subscription and get a instant discount of 10%. So what are the benefits of taking the subscription? First one is, yes, you will be provided 100% GATE syllabus with live as well as recorded sessions. Second thing is, you will be provided a live test and quizzes. And these tests and quizzes will include firstly topic wise test, followed by subject wise test, and finally there will be mock test and full length test also. Along with that, those students who are BTech appearing, they can prepare for their semester examinations as well as campus placements. You can see various coding related courses are also available on Unacademy platform. So from there you can prepare for your campus placements. Okay. Next one, for instance, let's say if you want the subscription for 24 months, then the amount is 44,000. Use my code, that is DEV1 DEV1 during subscription and get a discount of 10%. Then the final amount after discount will be 39,600. Similarly, let's say if you want the subscription for 3 months, then the amount is 13,750. Yes, use my code, that is DEV1 DEV1 during subscription and get a discount of 10%. Then the final amount after discount will be 12,375 and so on. So you guys, you can follow me on Unacademy Learning app. First download Unacademy Learning app. After that, you can follow me there. My profile link is given in the description of this video. If you follow me on Unacademy Learning app, then you will be getting the notifications regarding live lectures or live tests and quizzes. Okay. So in the last lecture, we finish out the functions. Okay. So today, yes, we'll see some questions based on functions. Okay, guys. Okay. So yes, this is the first question. Okay.
it is given that this is previous year GATE problem. So we can say that in the question it is given that consider the following relation on subsets of set S of integers. That means set S is of yes, integers, and between 1 and 2014, that means set S contains the element or integers between 1 and 2014. Next one, it is given that for distinct subsets U and V of set S, we say U is less than V if the minimum element in the symmetric difference of the two sets is in U. Okay, अगर सिमेट्रिक डिफरेंस करने के बाद जो मिनिमम एलिमेंट अगर U में है, then we can say that U is less than V. Then two statements are given to you. Consider the following two statements. S1, there is a subset of S that is larger than every other subset. And second one is there is a subset of S that is smaller than every other subset. Then options are given to you. Which of the following is correct? Option A, both S1 and S2 are true. Option B is S1 is true and S2 is false. Option C is S2 is true and S1 is false. And D is both S1 and S2 both are true. Isn't it? Yes, tell me. This one is given to you. So इसका solution हम find out कर सकते हैं. Yes, you only tell me guys. Yes, इसका solution हम देख सकते हैं. एक set आपको given है. उसमें integers हैं 1 to 2014. Yes or no? Yes, this is the given set S. यहाँ पे दो सबसेट्स, इसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो सबसेट्स आप लिख सकते हो. एक 5 होगा, एक वो सारे सबसेट्स जिनमें ओनली वन एलिमेंट्स है 1 2 then 3 up to 2014. Yes or no? ऐसे ही दो एलिमेंट वाले सबसेट्स होंगे 1 2, ठीक है, then 1 3 and so on. फिर 3 एलिमेंट्स वाले होंगे 1 2 3, then we can say that 1 2 4 and so on. और लास्ट में एक सबसेट होगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 up to 2014. यस और नो? तो मैंने आपको पहले भी बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस. इनमें कोई भी दो सबसेट लें, ठीक है, उनमें से सिमेट्रिक डिफरेंस अगर मान लो सेट U में है then U is called as U is less than V. Yes, that is given to you. So I already told you guys that let's say this one is your set A and this one is your set B. Yeah, so what is the meaning of set difference? Set difference means those elements which are either in A or in B but not in both. Yes or no? कुछ जो भी आपका शेडेड रीजन है ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस में आएगा. That means asymmetric difference with B means we can say that A minus B union with B minus A or not. बोल सकते हैं ऐसा? Yes, tell me guys. Yes, ऐसा अगर हम बोल सकते हैं तो आप मुझे बताओ ये सिमेट्रिक डिफरेंस है. यहाँ पे आपका जो फाई है ये एक सबसेट लिया आपने U, ठीक है, एक और कोई भी सबसेट लो इसके साथ आप बोल सकते हो तो उनका सिमेट्रिक डिफरेंस आएगा. तो जो भी आपका दूसरा आप जो भी सबसेट आप कंसीडर करोगे उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो ही आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस में, और उनमें से मिनिमम जो आप सेकंड सबसेट लोगे उसी में होगा. लेट्स से आपने बोला U इक्वल्स टू 5. यस और नो? क्लियर है? और आपने बोला लेट्स से V इक्वल्स टू कोई भी एक सेट लिया 1 2 3. So what will be the symmetric difference of both these sets? We can say that 1 2 3 only. Yes, तो इन दोनों में इसमें से मिनिमम किस में है, कितना है 1, और वो किस में लाई कर रहा है सेट V में. So we can say that V is smaller than U. तो आप कितने भी सबसेट्स ले लो ऐसे V V1 V2 V3 जितने भी लोगे सिमेट्रिक डिफरेंस के बाद जो मिनिमम एलिमेंट आएगा वो गारंटेड V में ही लाई करेगा. दैट मींस वी कैन से दैट दिस सबसेट वी कैन से दैट इज ए सबसेट व्हिच इज, yes, we can say that larger than
यस एवरी अदर सबसेट और नॉट, बोल सकते हैं? यस टेल मी। सिमिलरली ये आप कोई भी सबसेट आप अज्यूम करोगे और इसके साथ सिमेट्रिक डिफरेंस लोगे तो गारंटेड है मिनिमम एलिमेंट इसी सेट में बिलोंग करेगा। यस और नो? दैट मींस दिस इज ए सबसेट, वी कैन से दैट व्हिच इज स्मॉलर देन every other subset. Yes or no? Isn't it? So from this we can conclude that what? Yes, we can say that in this particular problem both statements S1 and S2 are true. That means option A is correct. Yes or no? Clear? This is previous year GATE problem. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, नथिंग एल्स। आगे बढ़े। यस गाइस टेल मी इफ दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन सो कैन वी प्रोसीड फर्दर। कोई डाउट है तो बोल सकते हो। यस टेल मी वंस इफ दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन सो कैन वी प्रोसीड फर्दर। ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। यस दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the question number 2. This is also previous year GATE problem. Yes, you only tell me what will be the correct answer. Here, let x and y be the finite sets and there is a function f from x to y. Which one of the following statements is true? First one is for any subsets a and b of x. Yes, this one. For any subsets of a and b of x, f of a intersection b equals to f of a intersection with f of b and so on. Okay, so tell me which one is correct. This question was in GATE 2014 in 2 marks. Yes, tell me. Yes, can you try once? Yes, tell me guys. Let x and y be the finite sets and one function is given to you from set x to set y. Then which one of the following statement is true? Yes, can you try once or not? Tell me once. Yes, tell me guys. Or need explanation? Tell me once. This is the given question. So try once and tell me what will be the correct answer. Yes, tell me guys. Yes. Are you trying or not? Yes or no? रिप्लाई करके बोल सकते हो ट्राई कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर आप रिप्लाई कर रहे हो करोगे ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं फिर। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करूंगा। यस, दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर गेट प्रॉब्लम। यस, टेल मी वंस। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 by 1 चेक कर सकते हो। एक एग्जाम्पल आप अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, कंसिडर कोई भी एक फंक्शन आप अज्यूम कर लो। कंसिडर ए फंक्शन। ठीक है, आपने एक फंक्शन कंसिडर किया। लेट्स से दिस इज सेट x and let's say this is set y. Okay, and function is from x to y. Yes, let us consider इसमें जो एलिमेंट्स हैं सेट x में लेट्स से a b c d and y contains let's say 1 2 3 and let's say mapping is like this. Yes, वन फंक्शन आपने अज्यूम किया तो यहाँ पे मैंने दो सेट्स अज्यूम किए। लेट्स से a इक्वल्स टू a कोमा b and let's say b equals to c comma d. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के लिए for any subsets a and b of x I considered yes two sets a and b, these are the subsets of set x or not. Yes, now you only tell me yes फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे
तो आप मुझे बताओ फर्स्ट ऑप्शन के लिए, यस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए यूनियन बी? ए यूनियन बी मींस ए बी सी डी। इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स क्या क्या आ रहे हैं आपके? 1 2 3 और नॉट? यस। और इसकी कार्डिनलिटी कितनी आएगी? 3। राइट हैंड साइड में सेपरेटली देखें, देन एफ ऑफ ए, इसमें कितनी इमेजेस आएंगी? 1 एंड 2, 2 आएंगी। प्लस आप बताओ एफ ऑफ बी, बी क्या है? सी कोमा डी, इसकी भी 2 इमेजेस आएंगी। उनकी कार्डिनलिटी भी ऐड करोगे, 2 + 2 दैट इज नॉट इक्वल्स टू 3। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। यस और नो? कैन वी से और नॉट? Isn't it? Next one, option B. Yes, function A intersection B. A intersection B यहाँ पे क्या है आपका? phi. Yes, phi है। Isn't it? कुछ नहीं है। Yes, you only tell me. और बताओ f of A उसमें कितना आएगा? 1,2 एंड f of B में 2,3। उनका इंटरसेक्शन लोगे तो एक एलिमेंट आएगा 2। These are not equal. That's why we can say that option B is also incorrect. Yes or no? Tell me, option B is also incorrect. Then ध्यान से देखना, yes what is the f of A intersection B? इंटरसेक्शन B phi है, उसकी कार्डिनलिटी कितनी आएगी? 0। एंड f of A की कार्डिनलिटी कितनी है? 2। f of B की कार्डिनलिटी भी 2। इन दोनों का मिनिमम लोगे तो वो क्या आएगा? 2। दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। That's why we can say that option C is also incorrect. Yes, can we say or not? Tell me. Is that clear? Okay. उसके बाद अपन प्रोसीड करेंगे ऑप्शन नंबर डी के लिए। Now you only tell me guys, it is given that for any subsets S and T of Y, F inverse of S intersection T equals to F inverse S intersection with F inverse T. तो यहाँ पे डी ऑप्शन में जो भी क्वेश्चन में अज्यूम किया गया है, क्या अज्यूम किया गया है? यस वी कैन से दैट इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। दैट मींस फॉर क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर डी वी विल अज्यूम दैट द गिवन फंक्शन इज 1 1 on 2, बिकॉज 1 1 on 2 होगा तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कोई भी आप लेके देख सकते हो, 1 1 on 2 फंक्शन बनाओ x to y और ये कंडीशन चेक करो वेदर दिस वन इज करेक्ट और नॉट। तो कोई भी आप कंडीशन ले सकते हो। लेट्स से आपने लिया, ठीक है, एक आपने बना लिया, लेट्स से दिस इज ए बी सी डी, लेट्स से दिस इज सेट x एंड लेट्स से दिस इज सेट y, दैट इज 1 2 3। एंड कोई भी आपने मैपिंग अज्यूम कर ली, लेट्स से दिस इज a, इमेज ऑफ a इज 1, image of B is 3, image of C is 2, image of D is 4. Let's say function is from x to y, isn't it? ये आपने फंक्शन ले लिया, this is bisection or not? Yes, we can say that this is 1 1 as well as on 2. तो जब 1 1 on 2 है तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए ऑप्शन डी के लिए। तो आपने इनवर्स वाला एक फंक्शन अज्यूम कर लिया, इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल बिकॉज दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। नाउ लेट अस अज्यूम, कोई भी आप अज्यूम कर लो, s and t of y, let's say s equals to 1 2 and let's say t is 2 3. Yes, now you only tell me what is the f inverse of s intersection t? s intersection t is 2 और 2 की आप मुझे बताओ इमेज क्या होगी इनवर्स फंक्शन में, दैट इज c। यस और नो? दिस इज इक्वल टू f इनवर्स s, f इनवर्स ऑफ 1 2 क्या आएगा? यू ओनली टेल मी। 1 2 के लिए आएगा a b एंड व्हाट इज द f इनवर्स ऑफ t? t इज व्हाट? 2 3। यस, 2 3 की इमेजेस क्या होंगी इनवर्स फंक्शन में? b c। यस और नो? टेल मी। f inverse of 1 2 will be a c. Yes, a c, isn't it? 1 2 will be a c and inverse of 2 3 will be having two elements b c. Yes, now you only tell me what is the intersection of these two AC and BC?
that will be the C only, and that is equals to this only, F inverse of S intersection T. That's why we can say that option D is correct option. Yes or no? This one is clear to everyone or not? Yes, tell me once. Okay. Yes. आगे बढ़े next one. Yes. Write down next question. Yes. Question number 3. You only tell me, guys. Question number 3. Yes. You only tell me. Yes. For question number 3, we can say that. Yes. You only tell me. Let's say two sets are given to you. Yes. Let us consider. Yes. Set A contains three elements A, B, C. And set B contains only two elements. Then the question is, a function is defined from A to B, and the question is how many number of into functions are possible. Yes, that is the question. How many number of into functions are possible? Yes, tell me कितने into functions possible होंगे? Yes, you only tell me, guys, how many into functions are possible. तो आप बोल सकते हो कोई भी वैलिड फंक्शन है, that function will be either into or onto. Yes or no? Either it will be into or onto. तो आपको मैंने बताया था number of onto functions. Yes, number of onto functions. इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? समेशन k equals to 0 to n. Yes, minus 1 raised to power k and ck, yes, into n minus k raised to power m, where yes, cardinality of A is what? M, and cardinality of B is what? That is n. Yes or no? यही अज्यूम किया आपने? Yes, tell me. Okay, तो आप मुझे बताओ, ध्यान से देखना. Yes, you only tell me, guys. ये आपने अज्यूम किया तो यहाँ पे आप बोल सकते हो m वैल्यू कितनी है? m वैल्यू इज 3 एंड n वैल्यू इज 2. तो इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे. यस, k इक्वल्स टू 0 मींस -1 रेज टू पावर 0. यस, n वैल्यू इज व्हाट? 2. 2c 0. then we can say that 2 minus 0 raised to power 3. Yes, next one plus we can say that k value 1 होगी, then -1 raised to power 1, then 2c1, then 2 minus 1 raised to power 3, then we can say that plus -1 raised to power 2, 2c2 into 2 minus 2 raised to power 3. तो ये तो आपका 0 बन जाएगा. यस और नो? यहां से आप देखोगे ये आपका 1 है, देन 2 रेज टू पावर 3 कितना आएगा? 8. उसके बाद ये आपका आ जाएगा माइनस, ठीक है, -1 रेज टू पावर 1, देन इनटू वी कैन से दैट 2 into 1. yes or no? that means 6. so आप बता सकते हो टोटल ऑन टू फंक्शंस कितने आएंगे? 6. yes or no? now you only tell me number of into functions will be what? Number of into functions will be total number of functions divided minus we can say that number of onto functions. तो टोटल फंक्शंस कितने होंगे? यस, 2 raised to power 3 minus we can say that 6. that means 8 minus 6 we can say that that is 2. so we can say that 2 is correct answer. yes or no? tell me, is that clear to everyone or not? isn't it? okay, आगे प्रोसीड करें. okay, write down next question. yes, write down next question. Let's say two sets are given. Consider the following sets.
Consider the following sets. Yes, let's say set A having 4 elements and set B contains three elements. And question, one function is from set A to B. Yes, now the question is how many into functions are possible in which or such that in all these into functions, yes, range, or we can say that codomain minus range is equals to singleton set. Yes, that is the question. Yes, codomain minus range equals to singleton set. That is the question. Now, can you try once? Yes, you only tell me. Yes, what will be the correct answer for this particular question? Yes, two sets are given to you. Let's say this is your set A containing 4 elements and this is your set B containing 3 elements. तो आपको ये function is from set A to B. Yes, you only tell me. Yes, tell me once. This is the given question. Okay. That means here we can observe that codomain contains 3 elements, that is 1, 2, 3. Yes or no? And इसका मतलब codomain minus range singleton set आना चाहिए. That means we can say that cardinality of range must be equals to 2. Yes or no? Yes, तो आप बोल सकते हो, ठीक है, codomain minus range अगर आप करोगे, ठीक है, codomain minus range means cardinality of codomains minus cardinality of range, ठीक है, that must be a singleton set, or we can say that that must be equals to 1. Yes, that is the question. Clear है? इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, कोडोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है 3, यस और नो, रेंज की कार्डिनलिटी कितनी होनी चाहिए 2, तभी आपकी सब्ट्रैक्ट करने के बाद कार्डिनलिटी आंसर कितना आएगा 1 ओनली. यस और नो? सो दैट इज द क्वेश्चन. यस, तो आप बोल सकते हो कि जो भी रेंज है आपकी इनटू फंक्शंस में उसकी कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए. यस और नो? यस, टेल मी. Yeah, so we can say that yes, 3 elements are there in set B and 4 number of elements are there in set A. Yes, now you only tell me total number of into functions. ठीक है, तो आप बोल सकते हो that is, let's say this is A, B, C, D and let's say this is set B. If this contains only 3 elements, तो आप बोलोगे इनटू फंक्शंस में से यस एक इनटू फंक्शन ये भी होने वाला है, जब सारे के सारे एलिमेंट किससे मैप्ड हो 1 से, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे रेंज की कार्डिनलिटी 1 आएगी, दैट मींस दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. सिमिलरली सारे के सारे 2 से मैप हो वो भी रिक्वायर्ड नहीं है, और सारे के सारे 3 से मैप्ड हो वो भी रिक्वायर्ड नहीं है.
तो ये कितने इनटू फंक्शंस हुए? 3 इनटू फंक्शंस हैं. These are not required. Yes or no? Can we say or not? Now you only tell me, if we put the yes values in this particular formula, that is for onto functions, yes or no? That will be summation k equals to 0 to n, then minus 1 raised to power n ck n minus k raised to power m. यस, यहां से आप m की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 4 एंड n वैल्यू इक्वल्स टू 3, तो आंसर आएगा 36. नाउ यू ओनली टेल मी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी हाउ मेनी? वी कैन से दैट 3 रेज टू पावर 4, तो कितना आएगा? 81. नाउ यू ओनली टेल मी इन 81 में से 36 कितने हैं? इनटू सॉरी ऑन टू, तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने होंगे? यस, इनटू फंक्शंस कितने होंगे? यू ओनली टेल मी. हाँ, इनटू फंक्शंस कितने होंगे? यस, वी कैन से दैट टोटल माइनस ऑन टू, दैट मींस 45. एंड इन 45 में से आपने देखा तीन आपके जो इनटू फंक्शंस हैं, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज उनमें यस वी कैन से दैट यस कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन माइनस कार्डिनलिटी ऑफ रेंज इज नॉट इक्वल्स टू 1. तो उसमें से तीन हटा देंगे. So 45 minus 3, that means 42. So we can say that 42 will be the correct answer. Yes or no? Tell me once this one is clear to everyone or not? Clear है? इसके अलावा इनटू फंक्शंस में आप देख सकते हो, इनटू फंक्शंस वो होंगे जिनमें रेंज 1 हो या रेंज 2 हो. अगर रेंज 3 हो जाएगी तो वो ऑन टू बन जाएगा. तो 1 वाले जिनमें रेंज 1 थी, जिसमें रेंज में एक ही एलिमेंट था, वो वाले हटा देंगे टोटल इनटू में. तो जितने भी आपके इनटू बचेंगे उनमें रेंज में एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स होंगे. यस और नो? सो वी कैन से दैट 42 विल बी द करेक्ट आंसर. यस और नो? इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो. Isn't it? Okay. ठीक है. So guys, that's all about the functions. Okay. In the next lecture, we'll start yes relations. That is very important topic for GATE point of view. Okay. So guys, you can subscribe our channel. Our YouTube channel name is Let's Crack GATE CSE. And if you want the subscription, I already told you guys that what are the benefits of taking the subscription. So if you want the subscription, then use my code, that is day1 DEV1, and get a discount of 10%. Okay, isn't it? Get a discount of 10%. Okay, also you can press the bell icon to get the notifications. And guys, you can follow me on Unacademy learning app. First download Unacademy learning app, and after that you can follow me. My profile link is given in the description of this video. From there you can follow me. Okay guys? Okay, so thank you so much. I'm going to close the session for today. So we'll continue tomorrow with the relations. That is very important. Okay. Okay guys, thank you so much.